Hello everyone. Once again, welcome back to Simple Ways. Today, we are going to learn question tag. As we all know that question tag is one of the very important topic in general English. You can expect at least 3 to 5 questions from question tag, which means at least you can say 6 to 10 marks will be there from question tag. So question tag is one of the very important topic in general English. So we will basically today we will learn the basic concept of the question tag, and we will also solve some questions along with basic concepts. Okay. First, what is question tag? Let's have a look on definition. A question tag can be generally described as a simple statement followed by a short question. Question tags are most often used in spoken language to confirm something that is said and also to encourage the listener to give an answer. In written language, the use of question tags can be seen only in dialogue writing and in stories which include dialogues. Okay, here what is saying that question tag will have a simple statement. Okay, with the along with that simple statement there will be a short question. क्या बोला है कि एक सेंटेंस दिया होगा आपको. ओके, एक सेंटेंस दिया होगा. वो सेंटेंस का साथ एक छोटा सा क्वेश्चन होगा. ओके, ये एक स्टेटमेंट दिया है, उसका साथ एक क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन. ओके, छोटा क्वेश्चन. वो क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलता है? क्वेश्चन टैग. ओके, जनरली वो लोग जो रिटर्न लैंग्वेज में यूज होता है, इसके डायलॉग्स लोग में ना, स्टोरी टेलिंग लोग में यूज होता है. ओके, तो इसलिए क्वेश्चन टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर्मेट कैसा है होता है बोलने से, फॉर्मेट विल बी लाइक इट. देयर विल बी, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द टैग विल बी पॉजिटिव. ओके, सिंपल सा बात है. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट जो नेगेटिव होने से क्वेश्चन टैग जो पॉजिटिव होगा. ओके, इतना ही सिंपल है फॉर्मेट जो, और बाकी खुद ब खुद आंसर आते रहेगा. ओके, तो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं. ओके, कि स्पेशल केसेस होता है क्वेश्चन टैग में. सो फर्स्ट केसेस इज व्हाट दैट व्हेन अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस इमोशन ऑफ एंगर, सरप्राइज, इंटरेस्ट, द क्वेश्चन टैग has to be positive even though the statement is positive. What is saying that if the statement is having an emotion, an expression of anger, surprise or interest, अगर स्टेटमेंट में एक इमोशन एक्सप्रेस किया है, एंगर का, सरप्राइज का और इंटरेस्ट का, अगर ये इमोशंस जो स्टेटमेंट में है, दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होने से भी क्वेश्चन टैग जो पॉजिटिव ही रहेगा. बट यहाँ में फॉर्मेट में क्या था, ये फॉर्मेट में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होने से हम लोग को हमेशा नेगेटिव ही डालना है. ओके, क्वेश्चन टैग जो, और स्टेटमेंट नेगेटिव होने से वाइस वर्सा ना, पॉजिटिव डालना है. बट यहाँ में स्पेशल केस में क्या बोला है कि अगर स्टेटमेंट जो एंगर, सरप्राइज और इंटरेस्ट है, इमोशन, ये तीनों इमोशंस है अगर वो स्टेटमेंट में, दैट मीन्स उसका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो जो पॉजिटिव ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. यहाँ में एक एंगर का इमोशन से, गुस्सा हो रहा है, कि गुस्सा होके बोल रहा है, एक गुस्सा का इमोशन से ये सेंटेंस पढ़ने से ना, यू थिंक इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, पूछा है कि नहीं ना कोई किसी को कि ये चीज के लिए आप प्राउड हो रहे हैं क्या बोल के. तो ऐसा स्टेटमेंट में जहां में हम लोग इमोशंस, एंगर का इमोशन या सरप्राइज या इंटरेस्ट का इमोशंस को हम लोग फील करने से उसमें हमेशा क्वेश्चन टैग क्या करेगा, हम लोग वही पॉजिटिव होने से पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होने से नेगेटिव ही देंगे. ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल केसेस क्या है, when there are two verbs, man and auxiliary or helping verb in sentence, the question tag should be formed using auxiliary verb. Suppose in a sentence there will be two verbs. Okay, in a generally there will be only one verb, but in some cases, in few cases, special cases, okay, there will be two verbs. One will be man verb and another will be auxiliary or helping verb in that particular sentence. Then that time what we will do is that we will use auxiliary verb to make question tag. Okay, हम लोग क्या करेगा, जब एक ही सेंटेंस में मैन वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो ऐसे समय में हम लोग जो टैग जो ऑक्सिलरी वर्ब से हम लोग टैग बनाएगा. फॉर एग्जांपल, दे वर वेटिंग फॉर हिम.
क्या बोला है, दे वर वेटिंग फॉर हिम। यहाँ में हम लोग को दो वर्ब देखा गया है ये स्टेटमेंट में। मेन वर्ब है वेटिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब है वियर। दैट मीन्स यहाँ में हम लोग को दो वर्ब मिल गया। तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ में स्पेशल केस में क्या बोला है कि हम लोग को जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी से ही टैग बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेगा, हेल्पिंग वर्ब को। ओके, तो यहाँ में वेयर था, ये स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव था। ओके, दैट्स वाई हम लोग नेगेटिव टैग देंगे, जैसे कि दे वर वेटिंग फॉर हिम, वेरन दे, है कि नहीं, वेरन दे, ऐसा होता है क्वेश्चन टैग। ओके, ये स्पेशल केसेस है। इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, सेंटेंस विथ प्रोनाउन सच एज नथिंग, nobody should be considered negative statement and positive question tag should be used. Suppose in this statement, okay, suppose in this statement the word nothing, nobody are there, okay, in the statement, then what we will assume is that we will consider or assume that statement as a negative. Okay, for example, nothing is going to be happen, nothing is going to be happen. Actually the statement is positive, but here the word nothing is there. Okay, the word nothing is there, that's why we assume that particular sentence as a negative and we will use the question tag as a positive. Okay, the word here nothing is there in this statement, that's why we will use the tag positive. And here you have seen the auxiliary verb is, so there, that's why we will use is only, okay, in the tag. And in next special cases, a sentence in the past tense will have question tag from using the verb did. Whenever, just remember, okay, whenever the past tense will be there, the sentence will be in the past tense, then we will use the question tag did, okay, the verb did. Whenever, जब भी कोई भी स्टेटमेंट अगर पास्ट टेंस में है, ओके, पास्ट टेंस में, फॉर एग्जांपल यहाँ में देख लो, कैन एंड हैरी प्लेड फुटबॉल, यहाँ में ये प्लेड जो क्या है, पास है, दैट्स व्हाई हम लोग दियन दे, ओके, दे क्यों लिखा है बोलने से, यहाँ में दो इंसान है इसलिए दियन दे। अगर सिर्फ हैरी खेल रहा था बोलने से दियन ही बोलना था, ओके, बट यहाँ में दो इंसान है इसलिए दे यूज किया। और डिड क्यों यूज किया बोलने से ये जो पास्ट टेंस है। ओके, तो जब भी क्वेश्चंस में जैसे कि लाइक प्लेट हो गया, फेस हो गया, जब भी ईडी आएगा, कोई भी वर्ब में ना ईडी आएगा, दैट ऐसे समय में हम लोग क्या करेगा, दैट मीन्स उसको पास्ट कंसीडर करेगा, वो सेंटेंस को हम लोग डिड यूज करेगा। ओके, मत भूलो, ओके, पास्ट टेंस में हमेशा डिड यूज करना है। और हम लोग दियन दे यूज किया है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि दे या ही शी, या यहाँ में डिड दे भी हो सकता है। इन केस अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव था बोलने से डिड दे होना था। ओके, बट यहाँ में स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द नेगेटिव टैग। ओके, नेक्स्ट स्पेशल केसेस इज द सेंटेंस with action verb in a simple present tense will have the question tag from using the verb do, does. What the sentence is saying that if the action verb is in simple present tense, okay, the action verb is in simple present tense, then the tag will be used, the tag will be formed using the verb do or does. Okay, it will depend, okay, it will depend that we have to use do or does. For example, if in for example in this sentence, he teaches English, here we have used does. Okay, we have used does because here es is there. Okay, if he teach English, then we could have used do, like don't he, but here the es was there. Okay, थोड़ा देर में हम आपको ये एक ग्राफ दिखाएगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि डू और डस कब यूज करना है। ओके, बोथ ऑफ द वर्ड और वर्ब वी विल यूज इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली, बट जब भी एस आता है, ओके, कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस जो हम लोग डू यूज करेगा, दोस यूज करेगा, दोनों में यूज कर सकेगा, बट यहाँ में जब भी ये वर्ब में ना एस आएगा तब हम लोग दस को यूज करेगा। ओके, अदरवाइज एस नहीं होने से हम लोग डू यूज करना था, और सेंटेंस जो क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए हम लोग ने नेगेटिव टैग यूज किया। इन केस ये नेगेटिव होता, ओके, इन केस ये स्टेटमेंट नेगेटिव होने से ये पॉजिटिव होना था। ओके, वही है क्वेश्चन टैग। यहाँ में देखो ऐसा है, ये
बस एक चीज को दिखाया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और हम लोग ने आंसर नेगेटिव टैग यूज किया। ओके, जैसे कि आई एम बोलने से आरन आई, ओके, आरन आई, आर बोलने से आरन, ओके, मीन्स लाइक ये वर्ब जब जब भी ऐसे कि लाइक यहाँ में ऐसे कि यहाँ पे इज था, ओके, यहाँ में एस था, यहाँ में प्लेट था, ईडी था, ओके, यहाँ में वेयर था, ये इस ये सब दिखाई दे रहा होगा, वही चीज, ओके, वही चीज को बता रहे हैं। जब इस होगा तो इजन होगा, वास होगा तो वजन होगा, वेयर होगा तो वेरन होगा, विल होगा तो वॉन होगा। एक चीज ये ध्यान रखो, बाकी तो सब सेम है। विल का क्या होगा, वॉन। हैव का हैवन, हैज, हैजन, हैड, हैन। और ये फिर से यहाँ में विल हैव का क्या होगा, फिर से वॉन ही होगा। ओके, विल मतलब वॉन होगा, फ्यूचर का बात कर रहे हैं। ओके, डू होने से डॉन होगा। जब भी ये डू और डॉन में ये चीज, डू और डजन में एक चीज क्या है बोलने से, दोनों जो सिंपल टेंस में ही होगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्टेटमेंट में आएगा। बट ये जो आप बोल सकते हैं डू, जो ज्यादातर हम लोग सिंगुलर में यूज करेगा, और जब वर्ब में एस या ई एस आएगा हम लोग डजन या दस यूज करेगा। ओके, और पास में हम लोग हमेशा डिड यूज करता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन टैग आखिर क्या है। ओके, द स्टेटमेंट्स यहाँ में वी विल बी डूइंग द सॉल्विंग द एग्जांपल विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव टैग। ओके, हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव टैग के साथ हम लोग सॉल्व करेगा। ओके, द क्वेश्चन हियर इज ग्रेस is the new lead. What is the statement? Grace is the new lead. So this, first of all, we have to know that this statement is a positive. Okay, what is statement? Statement is a positive. So we have to form the tag in a negative. Okay, negative means we have to use isn't, not. Okay, this thing is not. Okay, actually this is not only in a short form. Okay, isn't she? Because Grace was a girl, that's why we have used she. And here the helping verb or auxiliary verb is, that's why we have used isn't. Okay, so here again they have confirmed. Okay, they have confirmed. Here the tag, the statement is positive, and we have seen that their have is there, so that's why we have to use the tag in a negative way. Okay, or yeah, we can use the negative question tag, and they is there here. Okay, same thing only. Here in next segment, Thomas and Veer are on their way to the airport. Thomas and Veer are on their way to the airport. Thomas and Veer, that's why they. Okay, here are was there, that's why aren't they. Okay, aren't they. Suppose the question here, skip this part. Okay, only Veer is on their way to the airport, then isn't he, isn't he, the question will be like isn't he, if only Veer. Okay, but here Thomas was also there along with Veer, that's why we have used they. Okay, and here the auxiliary verb is are, that's why we have used aren't. Okay, in the next statement, her father is a doctor. Her father is a doctor. Here the statement is positive again. Okay, the statement is positive. Is here the verb, so isn't he. Her father is a doctor, we are talking about the father, that's why isn't he. Okay, don't confuse. Okay, we are talking about the father. Okay, not her exactly. Her father is a doctor, so isn't he. Okay, you like cookies is again positive statement. You like cookies, but it's a positive statement. But what the thing is here is that this is a simple present टेंस। क्या है स्टेटमेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, उसका वजह से हम लोग क्या करेगा, डोंट यू। ओके, क्या करेगा, डोंट यू, यू लाइक कुकीज, डोंट यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स, ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स, दैट मीन्स द क्वेश्चन हियर विल यूज विल यू। व्हाई विल यू, डोंट यू क्यों नहीं होगा, बिकॉज द स्टेटमेंट, यहां में एक चीज ध्यान दो, ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स, क्या बोला है, ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स, दैट मीन्स अभी तक पेपर नहीं लाया है, वो लाएगा, फ्यूचर में लाएगा, समझ रहे हैं।
कब लाएगा? वो फ्यूचर में लाएगा टिश्यू पेपर, जो अभी तक नहीं लाया, इसलिए हम लोग विल यूज करेगा। इसी के लाइक देखो, जब भी विल शाल होता है ना, दैट मीन्स ये फ्यूचर का बात कर रहे हैं। ओके, ये अभी तक नहीं हुआ, ये फ्यूचर चीज का बात कर रहे हैं, इसलिए विल यू। ओके, ये चीज को ध्यान दो। ओके, जब भी स्टेटमेंट पड़ेगा काम नहीं हुआ है, वो फ्यूचर का बात कर रहे हैं। ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स बोला है ना, तो अभी तक मांगा तो है, दिया नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल यूज विल यू। They bought a new LED TV. Bought. What is bought? Bought is a past tense, okay? Bought is a past tense. That's why dien, okay? And why dien? Because it's a positive statement, okay? Dien they, okay? Here bought was the past. That's why we have used it. You have been looking for an apartment. Haven't you? Okay? Haven't you? That's simple. Okay, what we have to remember first thing is, if a statement is positive, tag will be negative. Okay, if the statement is past, then we have to use did. Okay, if statement is simple present tense, we have to use do or does. Okay, other things, rest things will be same only. Is all the things will be same. If two name will if two person or two things you are talking about, the statement is talking about two or more things, then we will be using they. Okay, not he she. Okay, that also the point to be remembered. Now let's see the negative statement. Okay, now we will see the negative statement with a positive tag. हम लोग क्या करेगा, अभी थोड़ा पहले हम लोग ने पॉजिटिव स्टेटमेंट डाल के नेगेटिव टैग यूज किया था, बट इस बार हम लोग क्या करेगा, हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करके पॉजिटिव टैग डालेगा, क्योंकि एग्जामिनर्स लोग ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं, वो लोग नेगेटिव स्टेटमेंट भी देगा, इसलिए हम लोग को हर तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर जब एग्जाम दे रहा होगा उस समय में हम लोग को एनी वे से हम लोग क्वेश्चन पूछने से भी हम लोग सॉल्व कर सकना है। ओके, यहाँ में फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रेबिका एंड जेसे वेयर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। क्या बोला है, रेबिका एंड जेसे वेयर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब रेबिका और जेसे जो पहले से ही दोस्त नहीं था, स्टार्टिंग से ही वो लोग इतना अच्छा दोस्त नहीं था। ओके, ऐसा बोला है, तो the question is negative because here we have seen that not is there. If the statement is negative, then tag will be positive. Okay, so what we will do here, where is there? Okay, where is, यहाँ में already where है ना, that's why we will use where they, because two person is there, whenever two person will be there, we will use where they. Okay, if the sentence is talking about only one person, then where she, something like that will come. Okay, but here it is talking about two person, that's why we will use where they. Okay, why where, not weren't they? Because the statement is already negative, that's why we will use positive there. In next statement, Peter will not be attending the ceremony. Here Peter will not, that means it's a negative statement. Peter will not be attending this ceremony. That's why if the statement is negative, then that means we will use the positive tag. Okay, as for the format, as for the rule, if the statement is negative, then we are supposed to use positive tag. So here the verb is will. What is verb? The verb is will. So will is negative, so we will use will she. Okay, actually will he, not she. Okay, because Peter is a male. Okay, Peter is a male, will he. Okay, so Peter will not be attending the ceremony, will he. Okay, this will be the tag. And in next example, she will not have done that. She will not, again the negative statement. Here what we will do is will she. Okay, same thing only, will she. Okay, let's put the question tag. Okay, next, they have not arrived yet. Have not, negative again, so positive tag. Have they. Okay, buying a new car when you already had a loan wasn't a good idea. Buying a new car when you already had a loan wasn't good idea. That means it's a negative statement. Okay, wasn't a good idea. So the tag will be was it. Okay, we are talking about the statement, that's why it. Buying a new car,
when you already had alone wasn't a good idea. It's about taking the statement is talking about the idea. Okay, that's why we will say it as a it. Okay, ये आइडिया का बात कर रहा है स्टेटमेंट जो ओके गाड़ी वाड़ी का कुछ नहीं है, ये आइडिया एक लोन लेने का आइडिया का बात कर रहे हैं, इसलिए वाज इट बोल के बोलेगा. ओके, मेकिंग स्मॉल टॉक इजन योर फोर्टी. ये फिर से यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट्स वाई वी विल यूज इज इट. ओके, वही से ही फिर से ये स्टेटमेंट जो देखो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना सीखना पड़ेगा. ओके, स्टेटमेंट को पढ़ना सीखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट आखिर क्या का बात कर रहे हैं. ओके, इंसान का बात कर रहे हैं तो दे आएगा, शी आएगा, ही आएगा. बट जब स्टेटमेंट खुद ही एक रीजन का बात करता है, इट आएगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे लोन लेने का आइडिया का बात कर रहा था, इसलिए इट. मेकिंग स्मॉल टॉक्स इजन यूर 40 बोला है, ये स्मॉल टॉक मेकिंग स्मॉल टॉक का बात करे, स्मॉल टॉक इसलिए इट यूज करेगा. ओके, बालू द बेयर इजन द वन दैट सेव मोगली फ्रॉम द monkeys. ओके, द बालू द बेयर इजन द वन दैट सेव मोगली फ्रॉम द monkey. Is it? Okay, is it? Already isn't is there. Okay, so we will use is, and the statement is talking, so is it, we will say it's a is it. Okay, we are actually the statement is explaining something. Okay, that Mowgli Balu didn't save the Mowgli from the monkey. Okay, isn't the only one. Okay, isn't the one that saved the Mowgli from the monkey. So we are talking about the statement, not exactly particular person. But we here in this statement we are talking about this statement. Like in this statement here we are here in this statement we are talking about the Balu didn't save. Okay, that the Balu or bear, okay, isn't the one that saved Mowgli from the monkey. That's why we are talking about statement. That's why we will use again it. Okay, all the students have not submitted their assignment yet. Have not, always you have to look after this particular word. Okay, here we have used this. आप हमेशा जब भी स्टेटमेंट दिखाई देता है ना, ये चीज़, ये वर्ब को देख लो कि ये वर्ब जो नेगेटिव ना पॉजिटिव में है, यही चीज़ स्टेटमेंट को चेंज कर देता है. ओके, क्वेश्चन टेक समय में हैव नॉट बोला, इसलिए हैव दे. व्हाई दे? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी स्टूडेंट, दैट्स व्हाई दे, हैव दे. Tina had not informed the others about the change of venue. That means Tina, it's talking about now Tina. Okay, Tina had not informed the others about the change in venue. So here had, so we will use had, it's a negative, so we will use in a positive, and Tina, she. Okay, had she. And next, you cannot survive without your phone. Can. Okay, here the can is there, so we will use can. And the not, so we will use positive here because it's a negative, that's why we will use positive. So you cannot survive without your phone. Can you? Okay, the most suitable or favorable question take will be can you. Okay, so I guess इतना टफ नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट जानना है. स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, वहां में ऑलरेडी दिया होगा वर्ब. लोग देखो यही वर्ब को यूज करके टेक बनाया है सब, ये है वर्ब को. यहाँ में भी देखो कौन सा वाला था, was it. बस वही है कि आपको स्टेटमेंट कभी कभार जानना है, ईट पुट करना है, डे पुट करना है, शी पुट करना है. ओके, लेकिन क्वेश्चन टेक हमेशा टू वर्ड में होगा. ओके, टू वर्ड में होगा क्वेश्चन टेक, जो कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा. यहाँ में इज था, देखो यहाँ में हैव था. ओके, हैव था इसलिए ये, इसके बाद यहाँ में हैड था इसलिए हैड शी. ओके, कैनॉट, कैन यू. ओके, इतना ही सिंपल है. ओके, इसके बाद यहाँ में कुछ स्पेशल केसेस का हम लोग ने कुछ किया था, जैसे कि लाइक a positive statement with a positive question tag to express interest, anger, and surprise. In the previous cases, in the previous pages, we have seen the special cases, right? Let me show you. In the previous slide, I was talking about the special cases. Yeah, here I was talking about some expression of emotion of special statement. Okay, there will be some emotions of anger, surprise, or interest. In such cases, in such statement, if the emotions of anger, surprise, or interest is highlighted, then we will be using
the positive statement, in the positive statement, we will be using a positive tag, okay? In case if the statement is negative, there we will be using negative tag. It will depend on the statement, okay? But what we have to remember here is if the statement is highlighting the emotions of anger, surprise, or interest, okay? So let's solve few problems or few example regarding that particular case, okay? Positive statement with a positive question tag to express interest, anger, or surprise, okay? She is going ahead with her decision. She is going ahead with her decision. What do you think? It's kind of interest, right? That she is having her own interest. That's why she is going ahead with her decision, right? So kind of interest, you can say. So here the statement is positive. Okay, here the statement is positive. We will not use a negative tag. We will not use a negative tag. But here the statement highlighted the emotion of interest. That's why we will use again a positive tag only. This is the special case, okay? Here you are not supposed to get confused. Here, here in the positive statement, we have used negative tag like Grace is the new lead, isn't she? They have confirmed, haven't they? But here the positive statement, but we will be using the positive tag only for that positive statement because it expresses the interest, anger, and surprise. Okay. In next example, so they are moving to Italy. So they are moving to Italy. Kind of surprise, right? Kind of surprise in this statement. So it's a surprise, but it's a positive statement, but it's a surprise. Kind of surprise. That's why the tag will be positive only. Got it? It's a kind of surprise. It's a statement, it's a positive, but the sentence itself highlighted show the emotions of surprise. That's why we will use the tag as a positive, okay? Don't get confused, okay? Next example, you think this is a joke? You think this is a joke? You think this is a joke? Kind of anger, right? Kind of anger in this statement. Have you noticed? You think this is a joke? Somebody, our parents used to yell at us, right? When we used to do some mistake and all, so they used to yell at us. Do you think this is a joke? Like that, okay? Sometimes teachers will be yelling at the class in जो सबसे बदमाश होता है ना उसको ऊपर में हल्ला कर रहे हैं ना ऐसे ही है सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो एंगर है ये एंगर का स्टेटमेंट का हाईलाइट कर रहा है दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द पॉजिटिव टैग अगेन ओके हियर नेक्स्ट एग्जांपल यू आर जस्ट गोइंग टू सिट हियर क्या बोला है यू आर जस्ट गोइंग टू सिट हियर व्हाट डू यू थिंक ये एंगर का आ रहा है कि नहीं गुस्सा से बोल रहा है यू आर गोइंग टू सिट देयर टीचर ने बोला कि हिलना नहीं है यू आर गोइंग टू सिट देयर गुस्सा से बोल दिया ओके दैट्स व्हाई वी विल यूज आर यू ओके ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है बट टेक भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंगर हाईलाइट कर रहे हैं ओके सो दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ So this is the way it is going to be from now on, okay? Kind of surprise, okay? You can see some surprises, emotion in this statement, okay? So this is the way it is going to be from now. So that's why is there. So is, and then we are talking about the entire statement, okay? That's why we will use it is. So is it, okay? That's this मेरा ख्याल से ये जो भी है जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है एंगर होता है सरप्राइज होता है APSSB जैसा एग्जामिनेशंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो कि इंग्लिश का कोई पर्टिकुलर एग्जाम देता है जो कि थोड़ा होता है कुछ एग्जाम होता है ना जिसमें कि इंग्लिश जो मेन फोकस होता है ये सब क्वेश्चंस में आता है ये सब ना ये थोड़ा डेप में है आज तक APSSB ने ऐसा क्वेश्चन टैग बनाया नहीं जस्ट आपको ये दो चीज़ रिमेंबर करना है ओके नेगेटिव होने से पॉजिटिव होना है
और पॉजिटिव होने से नेगेटिव होना है। और ये चीज़ को, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ में मेन चीज़ है, बाकी सब सेम रहता है। विल, ये विल को देख लो। और इसके बाद अगर सिंपल टेंस है तो अगर एस आता है तो 10 होगा, और डू होता है तो डोन होगा। ओके, ये चीज़ को भी देख लो। और अगर सेंटेंस जो पास में है, if the sentence is in past then use did. Okay, did in question tag. Other things will be same. And here, if the statement is having nothing, nobody, that means a negative statement. Just assume that if sentence is having nobody or nothing, just assume that the sentence is a negative. Okay, that time you will be using the positive tag. Okay, and then rest here, if the verbs are, two verbs are there, main verb and auxiliary verb, the time you will be using the auxiliary verb only. That's a simple thing. Okay, this was the question tag, and this is one of the very important topic, because you will be at least getting 6 to 10 marks from this question tag. Okay, compulsory in every examination. So this is one of the very important topic. Hope you have got the idea about the question tag. So see you in next video. Till then, thank you so much.